अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकार बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए।
इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम। इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है।
भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत
हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
odd points lower at 17,643 or so. Markets staging a stunning comeback, and if you've been following the markets from before the budget to where we are now. Ramesh Mehta, who's now joining in as well, needs no introduction. Veteran to the market, investment banking, deals, M&A. Dharmesh, great to have you with us here on this important day. Thank you very much. It's bank offers you 8.5%, I may not be investing in equities at that given time. So there's competition coming to equity, which was not there before 2 years or last 2 years. Now there is serious competition. Dharmesh, do stay on. We've got a few minutes to go before markets close on We have been talking to and taken them public. They're hitting the manifesto. stolen the limelight on budget day. Then only the smaller companies today. Okay, let's talk a little bit more about the Adani Group stocks. They've partly stolen the limelight on budget day. Nimish showing
There's this change of running in. Well, there's this change of more than 5 lakh premium could be coming under the taxation aspect now. My question to you is this the cumulative? While it is cumulative, There's this change of more than 5 lakh premium could be change 5 lakh to you is this the of him for the or for the of this 5 lakh change change of there is of more than 5 lakh running in. There's this change 5 lakh could. My question to you is this the cumulative of all the premiums paid over the lifetime, or is it, say that 5 lakh change? Hi Vibha Life Insurance who joins us. Hi Vibha, I'm MD and CEO of HDFC Life Insurance who joins us. Hi Vibha, the budget that was just announced. Space now. To understand, the impact of the recent changes in the budget that were just announced, we have Ms. Vibha Padalkar, the MD and CEO of HDFC Life Insurance, who joins us. Hi, Vibha. Thanks so much for joining in. Well, there's this change of more than 5 lakh premium could be coming under the taxation aspect now. My question to you is this the cumulative of all the premiums paid over the lifetime, or is it, 5 lakhs that's paid in a single year, in a single financial year? What's your understanding? it is cumulative. However, it is one clarification. Lower space. Now,
to understand, the impact of the recent changes in the budget that were just announced, we have Mr. Vibha Padalkar, the MD and CEO of HDFC Life Insurance, who joins us. Hi, Vibha. Thanks so much for joining in. Well, there's this change of more than 5
Thanks very much. You just have to start with the market. I'll come to the budget in a bit because nothing is a growth budget. Great to have you with me. Stay with us. Let me bring in Gautam Trivedi also of Nepean Capital. Gautam, great to have you with us here on the program. Thanks very much. You just have to start with the market. I'll come to the budget in a bit because nothing is a growth budget. A lot of focus on. There will be happen. The 51 is currently be now percent which equilibrium and suddenly much street markets. Great to capital. Great to have you with us here on the program. Thanks very much. You just have to start with the market. I'll come to the. $80 points down. 187 is where we're at. Nilesh, just 1 point, just back to the budget on the real estate, right, where you could use. So this will impact the high-end luxury developers in an urban area. Great to have you with us here on the program. Thank you. Let's think we're joining an important day like this. Let's bring in Sunil Singhania as well, who's now joining. Earns the full 20%. They're significantly cheaper than what they used to be until recently. So that's my take on these companies. Adani Ports is now down, not with us. If you don't select, then you select, Thursday, when it hit about 540, it hit yours that. Nilesh, market sell off yours, when it hit about yours that sell off like this? Anything you're picking up? So one, the prices to be made into the economy amount to keep of 3%. And yes, at this point of time, economy requires more investment, which can have through a multiplier effect. A lot more jobs can be created. When the external conditions are tough at that point of time to keep the growth momentum on, which the team finance felt that there's a investment to be made into the economy. Number one. Second question you asked that in terms of the banking act changes, which are the amendments which are there, these are leading to how the governance of the banks can be improved upon, that in terms of the board representation, etc. Public sector banks or all banks? It will have been given. For that, actually. Get going. Let's just hold on to thought cross to Sapna Das. She's in conversation with the DEA secretary. Let's hear it out and then we'll get going with the conversation. Let's just hold on to thought cross to Sapna Das. She's in conversation with the DEA secretary. Let's hear it out and then we'll get going with the conversation. Congratulations on this budget. Very simple speech, very nicely done. Having said that, sir, massive step up in capex. That's one. Second, also some proposals in terms of amendments to the banking laws that will be required. I just want to cross to or can come and I think is a welcome correction to it. Please, a good correction said
for the Indian markets in a steep Macquarie. Macquarie Group is also joining us on the show now. Sandeep, afternoon. Are you all? Bring back. Macquarie Group is also joining us. What do you think on the budget percentage points? We will sending various because below that will and what will be here down. One will be the recent low in the carnage that we've seen over the last couple of days. The Nifty had taken support at 17,403, 17,405. So that's an important level, 17,400. And one level below that will be the 200-day simple moving average, 17,290. So just just watch out for these two markers because we're descending very, rapidly now. It's 17,468. So in a matter of minutes, we are losing a couple of percentage points. We had invited Sunil Singhania of Abacus Asset Management on the show now. Sunil, you gave us your view on the budget. It gave you a bit of smiles, but now many people perhaps are crying a bit. What do you think is plaguing the markets right now? What have you made of the reaction that we've seen in the last 1 hour? Obviously, as I said, it's been a very concentrated kind of reaction, and that is helping maybe the overall market sentiment, particularly the public sector banks. Apart from the insurance companies. And I think the concerns which were going on for the last 7, 8, 10 days and which seem to have been allayed over the last 2, 3 days are again coming up. I frankly don't have a view on what is happening there. But obviously, the market does tend to get worried when there are some sharp movements in a few stocks. And I think that would be the case. Foreign investors have been selling last 2, 3 days. Maybe today's number also might be a sell flow, and that might also be putting pressure on the markets temporarily. This concentration. I mean, look at Adani Ports is down 25% now. Even Ambuja Cement. Yeah. Ambuja. I mean, this is just complete collapse, right? I mean, in a single day, 0.25% of the value after the correction we've already seen. Losses kind of feeding on more losses. And this is incredible. 468 on the Adani Ports, Enterprises, Ambuja Cements, as you said, 20%. 500 points off the high on the Nifty. On the Nifty. 230 points. Now, this is panic. This is absolutely sheer panic. And of course, it's being, the epicenter, of course, is what's happening with the Adani stocks and names like Adani Ports, which were considered to be financially strong in that sense. In terms of the texture of the market, it's very, very important that we see a bit of a bounce from these levels because we took support at around 17,401. We bounced off that, and the 17,500 put was getting written for all these days. Even when we were at the low point of the day, the premium out there wasn't moving up. But now it seems, that we're breaking down. So it'll be important, at least on a closing basis, we see some bit of a bounce from these levels, and we're down 250 points. Now, we were at 240. Just see this, right? 240. That's the last 7 minutes. 240. We were at 17,600. Oh, wow. I don't think I have this wrong. 17,600, 7 minutes back. It's a waterfall decline. And that's the way to put it. We've lost 200 points in the last 7 minutes. Guys. I mean, this has got to be a bit of a, record price new theory. Down. Practically, Nilesh, let's bring in Sunil Singhania as well, who's
all of us a lot of has I frankly Written for all these days. Yes, the way Orderly way, right? and we all know Hong Kong is the fourth. Close point. Hong Kong is the fourth largest market in the world, ahead of India in terms of total market cap. So my view is that that money. Appreciate you joining in, giving us your comments.
ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಮುಖಾಂತರ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಸೇವಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಯಾರೋ वैसे भी कल 2 फरवरी है, यानी वीकली, मेरे ख्याल से आज जिसने ऊपर की कॉल बेची है या फिर जिसने नीचे की पुट बेची है,
if you want to play this domestic theme, shouldn't the other stocks then do pretty well, some of these cement plays? So this is a buy on dip market rather than South China. My feeling is that we are seeing convergence of couple of things. One, there is a short-term or tactical FPI outflow because they are finding other markets cheaper than India, be it China, Hong Kong, South Africa, Brazil, Mexico. The long-term and strategic money will invest in India because on a longer-term basis, we are cheaper. But they will probably wait for correction to invest. The bottom of the market will happen faster if that long-term money materializes. The second thing is that if US Fed, reaches peak of its interest rate, generally that results into emerging market inflow. India has 14% weight in emerging market index. Every time passive flows increase, we will get 14% flows. So my feeling is that this is the year of volatile movement. The top and the bottom will happen faster than what most people will be predicting, because at lower level, at lower valuations, not only global investors but also domestic investors will be buyer. At higher valuations, both will probably be withdrawing and the supply will be coming. So this is a buy on dip market rather than buy on rise market. Nilesh, do you want to tell us the impact of the market-linked debentures? There is a tax change on MLDs, market-linked debentures, and we know that that's used as a source of funding for NBFCs. How big is this issue going to be for the NBFCs? So I don't think so it will be material. There is about 75,000 crore issuance of market-linked debentures, and they were converting interest income into capital gains and helping save taxation for HNIs. Now, long-term capital gain was taxed percent. They'll get taxed at 15%. That's 5%. It's still substantially lower than 39%, which will be the other tax. So it does impact little bit of the MLD return, but it is still attractive. My feeling is that these markets will continue to grow, and NBFCs, which specialize in MLD, should not have much problem. Any particular names who are big in MLD that you've heard of? Most of them are unlisted companies. None of them are listed companies. 40 points now down. 17,623 is where we are at. And by the way, banks which were leading the charge, they're also now down sharply. I mean, they've cut their gains in half. HDFC Bank was up 4, it's up 1.6. ICICI Bank was up almost 5% at the day high. It's got about 2.5% on it. And I think, like with the Nifty, the banks index has also come off quite a bit. The high on the Bank Nifty was 42,015. And we have come off to about 40,746 or so. Market breadth has kind of narrowed 2:1 as compared to some 5:1, which we had right out of the market open. 1:2, the advanced decline ratio, not 2:1. 2:1, yes. 1,400 stocks are higher and about 750 stocks are lower at this point in time. Nilesh, infrastructure, right, has been it's clear focus, absolutely clear focus. I think the economic survey also pointed that out, saying that the last 2-3 years of capex is not an aberration. This is the start of a lot of spending which is going to take place. Within that space, looking at what you've been able to, which are areas which you are most excited about? Cement, could be execution companies, it could be others. So I think a portfolio will be a better approach. There are some very good construction companies which are having order increase as well as margin expansion. Materials companies like cement also will do well. And even capital goods company, while they are technically not part of broader infrastructure space, they should also benefit as the private investment revives. There will be much higher focus on execution, keeping in mind G20 and election. So you not only have benefit of higher allocation, but also faster execution. The entire basket can be bought. Nilesh, the other hope is that rural economy will start gradually recovering. We yet to see some evidence out there because the two-wheeler sales still are under pressure. In terms of a rural economy revival theme, how do you play this? I mean, some of the tractor makers have done well, but they have other reasons as well. But your sense? So I'll be playing this more via FMCG rather than auto. Yeah. Generally, we have seen over previous election cycle, 1 year before previous election cycle, FMCG has been outperformer. Yeah. Primarily driven by
election-bound government puts money in the hands of consumers, and there is rotation of money in the run-up to election. By and large, this goes to the bottom of the pyramid who go out and spend. So from liquor to bottom of the pyramid, consumer staples to consumer durables, everything should do well. So my bet will be that probably over next 2-3 months, you will have entry into FMCG space. And from mid-23 to mid-24, FMCG should be outperformer based on the previous cycle analysis. Okay, now the Nifty Bank has entered into the red. It's down 1350 points from the day's high. On the mid-cap index, it's down a full percentage point, which means from the day's high, the mid-cap index has lost 750 to 800 points. Nilesh, if you had to summarize the top 3 concerns for our markets right now, based on what we've seen today, the price action in Adani Group stocks, the sell-off in the PSU banking space, what would it be? It's just the valuation. At what point do the valuations provide comfort to you? So probably 10-15% down From below, here on. we should be benefiting. But more importantly, it's not my absolute position, it's my relative position. And I explained this in a lighter way in his Three Idiots situation. If you remember, there was a scene in that movie where Sarman Joshi, Amir Khan and Madhwan are standing in a line, and Madhwan and Amir Khan take a step back and suddenly Sharman Joshi is ahead. The same thing has happened in our market. We were in equilibrium vis-a-vis our peers like Brazil, Russia, China. They all fell down and suddenly we are looking very, very ahead. So the best outcome for us is that we consolidate at our level. Those guys move up. We come back to equilibrium in terms of our premium valuation, which is about 30-40% rather than 70-80%, which we have now. So we don't need to fall 10-15% for you to get that valuation comfort. You just need... A time correction can also come. My earnings will catch up. They can also come up and I can be But what's your base case scenario when it comes to the market? My feeling is that the bottom of the market and top of the market will happen much ahead of what street estimates. And that so if would everyone is expecting 15% correction, that's never going to happen. Probably will bottom out at 7-8%. Got it. Because at lower level, there will be buying. Stay with us. Let me bring in Gautam Trivedi also of Napian Capital. Gautam, great to have you with us here on the program. Thanks very much. You just have to start with the market. I'll come to the budget in a bit. Because nothing is a growth budget. A lot of focus on capex and capital outlay. No problems there. There are, of course, these niggles in terms of tax loopholes getting plugged in, and that at the margin may hurt certain sectors like insurance, etc. But the market sold off aggressively, 80 points lower. What's worrying it? Here's the thing. I think the budget, the one event that's the annual event at the start of the year, is out of the way. And again, it's back to basics with respect to fund flows. And I think that's something we can't basically escape. If you look at the FIs, for example, foreign institutional investors sold $18.5 billion of net selling in calendar 2022. They've continued into the month of January. So in the last 13 months, you've seen about $22 billion of net selling by foreign institutional investors. So that segment of the participant in the market obviously is not participating, in a matter of speaking. Second is the retail investor who've been coming through either directly or through mutual funds, AIFs, PMSs, etc. Now, if you look at that segment, up until now, they had really no alternative in terms of where to put their incremental money. But today, if you ask wealth advisors, and a lot of these consultants who are out there, increasingly when I meet them socially, I run into them or see them on television, I find them starting to recommend their instruments because you've seen as the RBI in step with the Fed kept raising rates, you're now looking at AAA rated bonds in India yielding anywhere from 8.5% to 9% pre-tax, but still it's a significant number. And I think if you look at today's announcement with respect to the pre-tax or the new tax regime, should I say, you will see a lot of people opting incrementally for fixed income and debt. So I think you're seeing some of that as well. So net, my concern really is that if the equity markets, from a forward-looking 6-month period, I think you will see some more correction happening in the markets. Not to mention, of course, we remain still till today the most expensive. It's street. You've been with us since the morning.
the budget very well joined well. Singhania, bring in Sunil Singhania as well, who's now joining in. Of course, needs no introduction. Market veteran Sunil, great to have you with us here. Thank you very much for your time. Your sense on the budget for ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುದಾನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 5,000 ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 5,300 ಕೋಟಿಯ
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕೃಷಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ರೈತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಿಲ್ಲರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಗಿನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋನೇ ಗತಿಯಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೃಷಿಕರ ಏನ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬೇಕಾದಂತ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಬಜೆಟ್. ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಬಜೆಟ್. Or whatever it is. Out here, clearly there is a bit of optimistic, right? You wanted that. All right. Nilesh, but Nilesh, what do you do out here? Clearly there is a bit of panic that's playing out here. But we were asking for a dip, right? Every market higher. But extra is selling, but in out there. But Nilesh Shah, MD and CEO of Envision Capital, joins us. DMA is within points odd, and now the 200 DMA is within around 70 points of going out there. But Nilesh Shah,
MD and CEO of Envision Capital, joins us. Hi, Nilesh. Well, you're back in the studio. Markets, in fact, they've done a complete U-turn, though. I was just remembering a couple of these brave market lines, Munga's line. The big money is made not in buying or selling, but in waiting, right? I mean, I think We've been waiting. As we see the close points out, and now the 200 DMA. The markets are down close to around 300 points odd, and now the 200 DMA is within around 70 points of going out there. But Nilesh Shah, MD and CEO of Envision Capital, joins us. Hi, Nilesh. Well, you're back in the studio. Markets, in fact, they've done a complete U-turn, though. I was just remembering a couple of these brave market lines, Munga's line. The big money is made. फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में कहा है कि ये 3 साल का बजट है, तो आने वाले 3 सालों के बारे में उन्होंने बात करी है, लेकिन उन्होंने आज की बात नहीं करी है। मेरा मानना है कि ये चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, Hello and where you could use for buying of setting off against property. It will impact. Yeah, you are unlikely to put on a stock specific. Okay, got that. Nilesh, we'll let you go. You've been with us since the morning. Thank you so much for your time, and it's a pleasure having you with us. Thank here you. On an important day like this. Let's.
you.